चर्चा पूरे विश्व में है। एक स्टॉल से लेकर दूसरे स्टॉल से एक से बढ़कर एक इंडिजियस यानी कि स्वदेशी रोबोट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और अब हम आपको मिलवाएंगे ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट से, जिसको चलाने के लिए ना ही किसी रिमोट की जरूरत है और ना ही किसी ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि वो खुद से ही यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट जो खुद से चलता है और कोई भी बैरियर आने पर खुद से रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पर लोग खड़े थे तो वो रुक गया था और देखिए अब अपने आप उसका चलना जो है वो शुरू हो गया है। और किस तरीके से आपको हम ये भी जानकारी देंगे आखिर कैसे ये इंडस्ट्रीज में, वेयर हाउसेस में जो भारी सामान है वो ढोने का काम करता है। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सामान जो है वो रख दिया, बांध दिया जाता है और उसको ये और जो रोबोट है वो खींचता हुआ ले जाता है। आप देख सकते हैं पावर्ड बाय इंफोसिस की तरफ से ये रोबोट जो है वो तैयार किया गया। और हमारे साथ बात करने के लिए पद्मा जी मौजूद है जो कि और ज्यादा जानकारी देंगी आखिर किन कंडीशंस में ये काम करता है। और देखिए अपने आप ये फंक्शनल कर रहा है, कोई रिमोट नहीं है, कोई से चला नहीं रहा है। पद्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ठीक कहा एकदम? एब्सोल्युटली। देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब सोचते हैं उसके बारे में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो सबसे बड़ा हमारा एक स्पेस हो जाता है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। स्पेशली हैवी ड्यूटी वेयर हाउसेज, डार्क वेयर हाउसेज, वो सब में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन और इसमें जो लोड्स होती हैं तो लोड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ इंजरी। तो जब हम इंजरी की बात करते हैं, जब हम लोड्स की बात करते हैं और एफिशिएंसी की बात करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ह्यूमन प्लस एआई की जो हमारी नैरेटिव है वो इसमें दिखाई देती है। तो द ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट इज़ वन सच सोल्यूशन जहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली, जैसे आपने कहा, वो लोड्स को पिकअप करता है, आइडेंटिफाई करता है और इस प्रकार से जब इसको मूव करना पड़ता है, वेदर इट इज़ इन एयरपोर्ट्स या फिर आप वेयर हाउसेज में देखेंगी या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस में, तो क्या हो जाता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ऐसे अनसेफ सिचुएशंस पे कम होके ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे टेक ऑन अ लॉट ऑफ दैट लोड एज वेल। देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन कितना वजन ये उठा सकता है? देखिए, छोटा पैकेट है उस पे मत जाइएगा, धमाका बड़ा करता है। धमाका बहुत बड़ा करता है। ये एक 1 टन का सोल्यूशन है, हमारे पास एक 5 टन का भी सोल्यूशन है। तो देखिए हमारे डिफरेंट सोल्यूशंस जो होते हैं अभी इंडिया में और भारत में आप देखेंगे तो हमें सोल्यूशंस की जो स्केल है वो नॉट जस्ट एज अ लार्ज स्केल, लेकिन छोटे छोटे एक विलेजेस में या छोटे छोटे शहरों में जैसे उनका वेयर हाउस होता है उसके लिए भी कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप देख रही हैं ये 1 टन वाला है, हमारे पास एक 5 टन वाला भी सोल्यूशन है जो ऐसे सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। कितनी दूरी तक ये ले जा सकता है, भार उठा के चल सकता है? देखिए ये सब कॉन्फ़िगरेबल है, तो अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें इसके लिए बहुत मशहूर हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फ़िगरेबल है। तो वन साइज नेवर फिट्स ऑल एंड स्पेशली ये वाले जो सोल्यूशंस हैं आर क्रिएटेड so that we understand the specific needs. बिल्कुल। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से बता रहे हैं 1000 केजी से लेके 5000 केजी तक भार ये जो है ढो के चल सकता है और उन कंडीशंस में भी ये काम कर सकता है, जा सकता है जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो मुश्किल होता है, जहां पर जो लोग हैं, जो इंसान है, कहीं ना कहीं उनको हार्म पहुंच सकता है, वहां पर ये ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट जो है वो ये काम आता है और अपना कमाल और धमाल जो है वो दिखाता है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। So right now joining me at the AI Impact Summit is Major Vineet Kumar, who is also known as the Social Entrepreneur of the Year 2025, and he has been working to create awareness about the responsible social behavior and responsible digital behavior as well. Vineet, thank you so much for talking to NewsX. So as we talk about the responsible digital behavior, why it is important, and of course we know how the demand for technology is increasing. We can see AI all around at the AI Impact Summit. So as the demand increase for AI, the responsibility also responsibility is also demanded. So how would you explain that? So basically it's all about scaling. You can see India is all about scale.
and the way AI, and in fact the Impact Summit, you can witness it, the kind of response that we got for the AI Impact Summit is huge. And it's scaling, it's reaching the grassroots, it's reaching MSMEs, startups, civil society, industry, academia. And this is where one of the key conversations, which all good things, you also have some challenges. So we have to talk about the challenges now. Challenges like the misuse of AI. AI is getting misused now. Apart from AI, it's also the agentic era that is also coming in. Agentic AI. You must have heard about Maltbook and several other things where the agents have started creating their own networks. So in that era, it is important, one, for the platforms to make sure that their platform becomes ethical and safe for everyone, and also for the end users, for them to ethically use the platform so that the platform is not misused in a way to create deepfake, AI-generated misinformation, and those information can be used to create a unrest and chaos among people. Also, what we have seen is, like we talk about a typical scam and fraud networks today, those have moved. Like the traditional Jamtara style fraud that used to happen, now with AI, it has also enabled the cyber criminals now. For them, they're using AI tools to quickly create a content, create APKs, and target end user, vulnerable population. This is where responsibility comes in. This is where the need for safe and trusted AI comes in. And that's why now is the time that we start discussing, now is the time that we prepare and make those guardrails so that AI is trusted, it is safe, and it is used for the benefit of the mankind rather than it creates some kind of harms and kind of creates some kind of issues for the humanity overall. Also, as well as we see, the government is also promoting AI. We have listened to the Prime Minister. He is saying that, we need to move forward with the technology, and AI is not going to take any job, but it is going to create. We need to understand that, and we need to work with it. So as we talk, how you are working with the government, as I got to know that you also work with METI. So how you are working with the government to create that awareness? Yes. So first is there's a lot of myth going around that AI is taking jobs. AI definitely, I mean, in some way, in fact, AI is automating a lot of things. So the traditional jobs are dying, but it is creating new set of jobs. The era has come where we start reskilling people, reskilling at all scales. And that is where all these initiative has to go at the grassroots level. What CyberPeace is trying to do is taking the entire conversation to the grassroots, even to the tribal areas. So where we kind of take the conversation, we tell them about the usage of AI tools for their day-to-day usage and all that. And along with that, we also talk about safety. So the conversation is that we talk to them about awareness, about using the tools, and also integrating safety, security, privacy, what to do when something goes wrong. So cyber resilience is also something that we are teaching them. And through the process, we are also making them aware of the key schemes of the government where they can use AI tools to kind of safely use it and also quickly get action, quickly get responses and all that. Now imagine, like for example, I mean, tomorrow if you had to, I mean, yesterday if you had to make some letters, you need to spend a lot of time, but today it's all automated. You just need to use one prompt, and that's where jobs like prompt engineering is emerging. So we need to reskill people on, say, prompt engineering as one of the areas. And it's basic. I wouldn't say it's too technical. It's just basic wherein you need to use how to, you need to understand how to use these AI tools. That's basic. You need to not be a coder or a developer or something like that. You just simply need to install the tool, use the right prompts and get your job done. Vineet, as you work towards the awareness, you study about the challenges of AI that might come. So what did you think could be one of the biggest challenge by the use of AI that could come in the future? So the biggest challenge is if we, again, don't have the right conversation on ethical and responsible AI now, and like I earlier mentioned, we don't develop the guardrails, it should not be a future which we see in the sci-fi movies that the machines are controlling humans. It should be always human in the loop, and it should be human which actually controls it in some way. It should not go out of the control. With now agentic AI coming in, this is where we already saw all the tech giants here in the room yesterday. They are here today. There's a lot of keynotes happening here. So this is where they are also seeing that what could be the possible future if they don't control it now, if they don't have the responsible and ethical AI frameworks in place, what could it be in the future? So all these guardrails need to be built.
It needs to be implemented. Or it's not something that we talk about it, we develop framework. The framework is also about implementation. Unless we implement it, it will go out of control. So we have to make sure it remains in control, and human is always in the loop. While any such application, any such process is being, so human should always be in the loop for that. Thank you so much, Major Vinny. Thank you. So from this conversation, what we got that it should always be a human that control technology, not a technology that, controlling the human. And as well, how important it is, the responsible digital awareness is for the future generation, because the demand of AI increases, and as well as we need to be very responsible while using the AI. I'm Arzu Seth with video journalist Dinesh for NewsX in Delhi.